Various topics. He has been an inspiration for all the civil servants, service aspirants in India. Give a big round of applause, everyone. Am I audible? तैयार रहना पड़ेगा भाई। Hello. Am I audible clearly? Yes, sir. NIT दुर्गापुर में आने से पहले I never realized that I can ever get cheers. Usually I get tears actually. And going by the comments I get on the social media, on the YouTube channel of DRISHTI IAS, under those mock interviews about me, I generally I was expecting when you look at my face, I'll scare you away. That was my initial understanding, but I would like to thank Dr. Dev Kumar for this wonderful initiation of the crowd. Because if you realize, normally ऑडियंस को सेंसिटिविटी के उस लेवल तक लाने में जिस लेवल तक डॉक्टर देव कुमार ने पहले पहुंचा दिया है, I eat up around 60% of my time allotted. So that 60% of the time is now saved by Dr. Dev Kumar, because that is the ultimate objective. If you look carefully how I conduct those interviews, you'll realize that my sole purpose there is to bring that sensitivity, element of sensitivity with respect to gender, with respect to class, with respect to other social categories. And here I thank you, Dr. Dev Kumar, for already initiating that, and so I can actually start talking heart to heart to you. That's what the objective right now is. My name is Vijender Singh Chauhan. I don't have that big story to share. Yes, I do have those small anecdotes which I'm sure you'll be interested in. Can I have this show of hands? You're happy with the way if I talk in the same language as Dr. Dev Kumar spoke, Hindi and English mixed, or you want English to be preferred? Fine. Thank you. अगेन एक बार और फिर से समय बचाने के लिए शुक्रिया। जहाँ तक कहानी की बात है, एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ, और कहानी मेरी अपनी ज़िंदगी की है। मेरा नाम विजेंद्र है। मैं जब अपने कॉलोनी के म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। दिल्ली की एक बस्ती है भजनपुरा, जो कि उस समय अनऑथराइज बस्ती कहलाती थी। लगभग वैसी ही ज़िंदगी डॉक्टर देव कुमार जैसी आपकी थी, लेकिन आई डोंट वांट टू प्ले ऑन दैट। मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर हम दो दोस्त थे। मेरा नाम विजेंद्र था और मेरा एक और दोस्त था जिसका नाम देवेंद्र था। तो ये विजेंद्र और देवेंद्र की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को नाम पर हैरानी हो रही है, ध्यान रखिएगा, मैं लैंग्वेज का विद्यार्थी हूँ। नामों का एक वर्गीय इतिहास होता है। नेम्स हैव देयर ओन जर्नी ऑफ क्लास। Class, which effectively means the generation of my father used to have names like Rampal, Tempal, Tejpal, Dharampal, and then came my generation where Vijender, Devender, Dharmender used to be the name. Then came the next generation where Ashok and Amit were the better names, and then came your generation where Akshat, Akshika, Akanksha are the names. It has a lot to do, those who have studied little sociology, they'll understand that it has a lot to do with the Sanskritization. We go more and more Sanskritized, which means the language of the elites, the moment we move up the ladder in the class. So that is basically the idea of changing names. So back to the Vijender and Devender, sorry. Devender was my primary school friend. And when I moved up the ladder, in the sense that I
moved to a better school, which is again a government model school, then to an engineering school, then to the Delhi University, and then went on to do the Delhi University PhD. Devinder was left there only. There only. I was good in mathematics, he was good in handwriting. Later he took up the profession of writing signboards, and he was a good signboard writer when I last came to know of him. But he was as good as I was, and this is the point I want to make. जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो इंटरव्यू लेने में हमारे सामने जब आके कैंडिडेट बैठता है, वो एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक पूरी कहानी होता है. And I want you to recall your Devinder. Please take a point, take a while. याद कीजिए अपने प्राइमरी स्कूल के उस बच्चे को जो आपका दोस्त था, दोस्त नहीं था तो आपकी क्लास में था, and he or she was as good as you are or you were. But then there came situations where you are here at NIT. You could have been at IITs, you could have been at IIM, but that doesn't matter. What matters is that Devinder of yours, it's still there, picking those gold, right? And you need to realize that you're not here essentially because you're better. Yes, I understand that you did that midnight oil. आप लोगों ने वो रात पढ़ाई की है जेई निकालने के लिए, कोटा गए, लेकिन कोटा भेजा जा सका इसलिए. प्लीज अंडरस्टैंड, देवेंद्र इज स्टिल देयर समवेयर. मेरा देवेंद्र साइन बोर्ड लिख रहा है, उनका देवेंद्र कोल उठा रहा है, आपका देवेंद्र कुछ इसी किस्म के काम कर रहा होगा, बट ही और शी वाज एज गुड एज यू वर. You need to understand, and that's why I want you to count your privileges. That is the most important thing you can do with your life. The privilege of studying in NIT Durgapur, able to experience the spring, पतझड़ के इस मौसम को महसूस कर पाना. मैं जब उतरा तो मैंने आपके पूरे कैंपस में लगातार वो पेड़ से गिरे हुए पत्तों की एक पूरी की पूरी चादर बिछी हुई देखी. इसे महसूस कर पाना एक प्रिविलेज है. Please count your privileges. That is the most important thing you can do to your life. इसलिए जब मेरे सामने आके कैंडिडेट बैठता है तो मैं उसे स्टोरी की तरह पढ़ता हूँ. मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वह कौन सी जगह थी जहां से इस देव कुमार ने वो टर्न लिया कि वो चोरी का कोयला उठाने की जगह पर LIC के माध्यम से या किसी भी जो भी रास्ते में तरीका मिला उसके माध्यम से उस सीढ़ी को चढ़ेंगे और वो वहां पहुंचेंगे जहां आज पहुंच पाए हैं. और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि और ऊपर आप पहुंचेंगे. Please count your privileges. It is important. Why I am saying so? Because of late it is happening a lot with me. लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं क्राउड के सामने खड़ा हूं और उनको बताऊं, उनको मोटिवेट करूं. As if जो लोग किसी वजह से उतने मोटिवेटेड नहीं हैं वो उनका ही फॉल्ट हो. जैसे उनकी गलती है कि वो NIT दुर्गापुर में नहीं पढ़ रहे या नहीं पढ़ पा रहे. I'm sorry, मैं बार बार आपका इंस्टीट्यूशन सामने लेकर आ रहा हूँ because I like this institution a lot. But overall, what I'm trying to say is very simple. कि जो लोग उन सफलताओं की सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाए, उसके पीछे के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उनके क्रिएट किए हुए नहीं हैं. इसलिए जो डिमोटिवेटेड हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हैं, उन्हें इस बात के लिए ब्लेम करना बंद कीजिए. ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप जानते हैं रेप केसेस में होता है, ईव टीजिंग में होता है और तमाम किस्म के क्राइम अगेंस्ट विमेन में होता है कि जो कुछ होता है जो जिसके साथ हुआ हम सबसे पहले उसी को ब्लेम करते हैं. तुमने कुछ कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे इसलिए तुम्हारे साथ छेड़खानी हुई, तुम रात के अंधेरे में गई थी इसलिए तुम्हारे साथ और बुरी हरकतें हुई. This is victim blaming, plain victim blaming, and it happens in every walk of life, not just in matter of gender, but everywhere. After all, I want to ask you, मैंने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, उसका नाम था अक्षत जैन.
Yes, same. The proposed to the glass of water guy. His father, Indian Police Service officer. Mother, Indian Revenue Service officer. Both of them stationed in Jaipur, capital city. He studied BTech Design from IIT Guwahati. From the moment he was born, he was prepared to become a senior civil servant. Everything that money can buy, everything that the resources and connections, as you mentioned, can arrange, was arranged to him. And he became an IAS officer. I cannot blame him for his privileges. But I want to tell you that it cannot be compared. It should not be compared with anybody like Dev Kumar, with me, with anybody else, or but that girl जिसका इंटरव्यू मैंने लिया, उस बच्ची के पिताजी हॉकर थे. वो छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाकर राजस्थान के किसी शहर में बेचा करते थे. उस बच्ची ने जैसे जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की, बाद में वो आईआईटी से एमटेक करने भी पहुंची और उसका भी सिलेक्शन हुआ. उतने अच्छे रैंक पे नहीं हुआ जितने अच्छे रैंक पे अक्षत का हुआ था. But the thing is, you cannot compare orange with apples. And this is what I want you to, this sensitivity I want you to imbibe. That is the most important thing. Success झक मार कर आएगी ही आएगी. एक छोटी सी बात और आप लोगों से शेयर करनी है. It has to do with the basic thing कि आप लोग अक्सर जब उम्मीद करते हैं कि आपके सामने कोई स्पीकर आएगा, मुझ जैसा व्यक्ति, और वो आपको कुछ कहानियां सुनाएगा, या बल्कि आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर बाकायदा एक प्रोफेशन, जिसमें मुझे कभी मेरे पास एक दोस्त पहुंचे और उन्होंने आके बताया कि देखिए जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत एनर्जेटिक दिखाई देनी चाहिए, बहुत चिल्ला के चीख कर, आपके हाथ जो है वो सामने की तरफ होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मैं इनमें से किसी चीज का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन सच्चाई क्या है? कोई भी व्यक्ति, किसी की भी कहानी, कोई भी वक्ता कब बेहतर वक्ता है, कब बेटर कम्युनिकेटर? मेरा तो काम कम्युनिकेशन का है. सो हु इज अ गुड कम्युनिकेटर? क्या अच्छा कम्युनिकेटर वह है जो आपसे आपका विवेक हर ले? मैं ऐसा बोलूं कि आप उन्माद में भर जाएं, फिर वही सोचें जो मैं चाहता हूं कि आप सोचें, वही महसूस करें जो मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें, वही कहने लगें जो मैं चाहता हूं कि आप कहें. Then will I be a good speaker? No, I will not be. Please trust me. Because a good speaker is not the one जो कि आपकी विजडम को हर ले, आपके विवेक को हर ले. That's not about being good speaker. Good speaker is the one जो जब पोडियम से नीचे उतरे तो आप पहले से बेटर पर्सन, so that you are a better thinking person. You're a wiser person. आप उन्माद में उछलने लगे तो फिर ऐसे उन्मादियों को तो कहीं भी डाला जा सकता है, दंगों की तरफ भड़काया जा सकता है, आग लगाने के लिए कहा जा सकता है. हिटलर बहुत अच्छा स्पीकर हो जाएगा, but that is not the idea. Idea is that after the communication you should be a better person. And this is what I evaluate when I look at the person who's sitting across the table in any interview. Is he the person who's bluffing? Is he the person whose integrity is doubtful? Is he or she is the person whose sensitivity is missing? Then forget about becoming a good IAS officer. You're not even a good human being. And if you're not a good human being, you cannot be a good administrator. So what I'm trying to say, all of you, आप में से वे सारे लोग जो कल को, आखिर आप मुझसे सुन रहे हैं तो मेरी शक्ल तो इतनी अच्छी है भी नहीं, दुर्गापुर की धूल इस समय मेरे चेहरे पर और कपड़ों पर है. मुख्यतः आप जिस वजह से मुझे सुन रहे होंगे, तो प्राइमरी द रीजन इज प्रोबेबली समवेयर डीप इनसाइड यू हैव दैट डिजायर, दैट एम्बिशन that you would like to face the Dhawalpur house someday.
If that is the case, then I can give you a few things. One very simple thing, and please take it seriously. This thing is that please enjoy your journey. Your journey from here to Dholpur house to Lavasna, wherever. Doesn't matter. But the most important thing is you should be enjoying the journey and not spoiling the joy of the journey because you believe there is some destination there. Please understand, you have to enjoy the entire journey and then you'll reach destination and you'll realize that destination become more joyful. One thing. Another thing, as I said, you should work hard. You should love your journey the way you love in romance. I don't know, I mean, earlier it was very difficult to talk about romance in engineering colleges. Sex ratio used to be so skewed. When I was studying, electrical engineering, 0 girls. Mechanical engineering, 0 girls. Architectural engineering, architecture assistantship, 40% girls. And then architecture assistantship was the only branch in my college which was a modification of desires. Modification of desire. But now engineering colleges are better place. Though still your girls' hostel have those barbed wire over their boundary wall. Yes, sir. In the same way as my 100-year-old in Delhi University with Humanities Social Sciences has unfortunately those barbed wires of the girls' hostel. Unfortunate. But I still believe your engineering college is better than mine, and I'm sure tomorrow our girls' hostel will be as good as boys' hostels are. Without barbed wire, with freedom. But that will be possible only if you realize that you cannot change your life in a solitude, in a solo manner. You'll have to change society. You have to make society a better place. Only then you'll have every place better. You cannot think of rising alone. There is no point rising alone. If there is disparity, if there is despair, if there is desperation, then no matter how अकेले आप कुछ भी हासिल कर लें, जब जिंदगी इस लायक, दुनिया इस लायक नहीं होगी कि उसमें जिया जा सके, तो there is no point. That is the last part of my message, that be sensitive towards the other gender, sensitive towards the other social categories of caste, community and others. And it is as important as knowing your own domain knowledge. If you're a mechanical engineer and you have good knowledge about those carburetor engine and MPFI engine, that won't make you a better human being, that won't make you a better IAS officer. Knowing is always better than not knowing, but still I'll suggest that please be a better human being. That is the most important thing. That is the only message I wanted to give to NIT Durgapur. Thank you very much. Love you all. That was truly a very inspiring speech, sir. Thank you so much.